Hello friends, this is the tutorial 02 and we will discuss about the variable. So बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और क्रिएट करते हैं tutorial 2 नाम की फाइल tut-02.cpp and we can write our syntax. And before we starting the variables, we will discuss about the columns, sorry, comments. So there is two type of comments in C++. First is the single line comment and second is the multiple line comment. Single line and comment मतलब अपन एक्स्ट्रा कुछ भी लिखना चाहते हैं कोड को डिफाइन करने के लिए, उसके फंक्शन को डिफाइन करने के लिए वो अपन कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिसका कि पूरे कोड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अपन अब फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं, लाइक द कोडर, and this is not affected the code, and we can use the forward slash and star to create a multiple line code. Like this we can write a multiple line of commands that doesn't affect on the program. So अब अपन स्टार्ट करते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल इज एक कंटेनर की तरह होता है मेमोरी में। जब अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में एक कंटेनर बन जाता है जो कि मल्टीपल वैल्यू, जो कि वैल्यूज को, टेक्स्ट को, इनको स्टोर करता रखता है, डेटा स्टोर रखता है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल। इंटीजर, we can use control slash for the single line comment. Integer stores the integer integer value, it stores the integer value, and we can declare by the int. And now we write name of the variable num, like num. This is the declaration, this is the declaration of the variable, and num equals to 135. It is the assignment. असाइनमेंट। सो इसका मतलब हुआ कि अपन ने इंट का मतलब इंटीजर, इंट इज ए डेटा टाइप दैट डिक्लेयर द इंटीजर वैल्यू, एंड नम इज ए वेरिएबल नेम। तो जो मेमोरी में जो इंटीजर टाइप का ब्लॉक कंटेनर बनेगा उसका नाम होगा नम। और इसका मतलब होता है नम इक्वल्स टू 135, का मतलब होता है कि 135 असाइन हुआ है नम के अंदर। सो उस कंटेनर के अंदर नम 135 होगा। We can change this value, like we can say 15. So now it num stores the 15 and 135 हट जाएगा। So if we can say see out num, so यहाँ पर यहाँ तक num की वैल्यू 135 है, इसके बाद num की वैल्यू 15 हो गई। So if we run the program, we use 35, sorry, we can add the new line endl and num initially num is this, and
after redeclaration. Num is so initially num is 135, after redeclaration num is 15. नेक्स्ट अपन चलते हैं float. Float is a variable that stores the all the real values. ये real values को store करता है with decimal. So we can use float to declare a float variable like your GPA equals to 9.5, and we can use that both step with and in a one step like this, declaration and assignment with, and GPA equals to 9.5. So GPA is GPA, and new line handle will added. Now it is uh, sorry, we can't add the new line here after that now handle. So this handle is very important to add a new line. So GPA is 9.5. नेक्स्ट अपन चलते हैं, सॉरी, नेक्स्ट अपन चलते हैं कैरेक्टर टाइप पे. कैरेक्टर, कैरेक्टर इट स्टोर्स दी a character, है character will declare by the chair, sorry, chair, and like this currency. So chair is a character type of data type that stores the only one character, जो कि अल्फाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है. We can use this column to declare a character like this dollar, sorry, dollar. So see out your currency. Currency is currency handle. Now we run the program. So your currency is dollar. Next we discuss about the boolean variable. Boolean. Boolean stores the true or false. True or false. False. Like तो boolean एक टाइप का कैरेक्टर, एक टाइप का डेटा टाइप है जो कि ट्रू और फॉल्स को स्टोर करता है. इट स्टोर्स gives 1 for true and 0 for the false. See, oh sorry, uh, we use bool to declare a boolean variable. Bool like student, student equals to true, and we can print cout, sorry, true, student, student, handle for new line. Now we will run your currency is dollar and 1. So this is a true for 1. If we can say
false, then it is doing to the 0. नेक्स्ट अपन चलते हैं स्ट्रिंग. स्ट्रिंग string is an object that stores the line of code, line of text, sorry. It stores the line of text. ये ये लाइन ऑफ टेक्स्ट मतलब ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकती है, इस ये फ्री स्पेस को स्टोर कर सकती है. ये एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है. जैसे कि कैरेक्टर सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टोर कर सकता था, स्ट्रिंग बहुत मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकती है. वी कैन यूज स्ट्रिंग टू डिक्लेयर ए स्ट्रिंग लाइक नेम. नेम equals to the coder. So this your currency is this also a string. This is also a string. GPA is this is the string, and we can write the C out name. We can write the name name name. So name is the coder. So there are the main very important variable in the C++ that you need to learn. So उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे. So thank you for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.